So, hi everyone. Uh, Please drop in chat whether I'm audible or not. Check, guys. Chat me whether I'm audible or not. Good afternoon. It's good evening. Good evening, Vinu. So, can you please help me? Am I audible or not? Audible. Okay, great. So, hi everyone. Welcome to this boot camp. So this boot camp is especially for you guys, and this is all about C++ programming and DSA. So this boot camp is for next 10 days. Whether in next 10 days, this may 5 days are the live session, and next 5 days are the recorded session. So I have something to share with you guys. Okay, let me present my screen. Share screen. Okay. So I guess my screen is visible. Do let me know, guys. Hi, Rohit. Hi, good evening, Krishna. Hi, everyone. So do let me know whether my screen is visible or not. Then we'll proceed. I guess it's visible. Okay. Okay. So this is the entire documentation, which tells about ki how your next 10 days will look like, and this is a quick rundown कि क्या होने वाला है in the boot camp. So starting from today, like today is your first day of the boot camp, and we are going to start with basic functionalities, introduction and installation of VS Code and C++. So before wasting time, I really want to invite our mentor today. By the way, our mentor is Adhiraj Singh. He is our mentor, and he is going to train you, guide you, and help you to learn C++ and data structure. So just a second. And before moving forward, these are the resources. Like this is the entire notion which I have mentioned in the comment as well. So you can see that comment as well. Pinned comment is there, so you can access this motion. And here you will see your entire timeline. What is day one, day two, day three, and moving forward, you will see your perks and benefits and the resources. So like anything which is being shared by our mentor, all the resources will be updated within a day once the session is completed. Okay. And here is your assignment section. So the thing is, whenever if mentor assign you any assignment, so you can complete the assignment and you can submit it. Okay. And there's a one important thing key, whichever email address you have mentioned during the registration, please try to mention that email address only, which will help us to monitor your assignments. So yeah, this is a quick rundown, and let me stop sharing my screen, and I will invite our mentor. Okay, so hello, Adhiraj. Hello, am I audible? Hi, Sanskar. Yeah. Can you hear me? Hi, yeah, I can hear you perfectly. I can hear you. Okay, hi, how Hi, are you, Sanskar. sir? How are you? I'm एकदम great, सही great. चल रहा है. How are you? थोड़ा सा डिले आएगा, बट हाँ, everything is going good यार. आपका सर कैसा जा रहा है? Everything is great. Just looking forward for this boot camp, Okay. and very excited to share my knowledge and get to deliver the knowledge to the people who are joining this boot camp. Yeah. Got it. By the way, guys, I will be sharing all the details regarding the bootcamp session in your groups as well as via email. And your mentor is also there. He will also guide you entire thing right from CPP, DSA, and might be thoda chit chat ho jaye. So it's like that. So over to you, Adhiraj sir, and looking forward for the session. Sure, sure. Uh, Okay, so yeah. I guess I am audible to other people also, right? Can you please let me know, guys, in the chat if I'm audible or not? If there is any like issue with the audio video, please let me know in the chat box. Okay. So good evening, everyone. Welcome to this boot camp we are having for C++ and DSA.
right? So let me just quickly like set the agenda of this boot camp, right? Like how are we gonna start, how are we gonna proceed with the boot camp, and what are we all we're gonna cover over here, right? So the first few days, let's say uh, for 5 days, I guess we will be having live sessions over here, right? So in the live sessions, we will be covering a lot of things related to C++. Like even if you are someone who is learning C++ for the first time, or maybe the one you are learning again, like revising C++, right? So uh, this is for everyone. Even if you are doing for the first time, even if you're doing again for the revision for CPP and DSA preparation, right? So we have created this course keeping everyone in mind, and we're gonna be starting with the very basic first of all, and like from the very basic variable data types, loops, conditions, and all, right? So we're gonna be taking from take it up from the starting, and we go and understand the concept of fundamentals of CPP. Then we will be covering the oops part also, which is very important. Even if you are like preparing for any profile, very important concept of oops, right? Then we will have some project that we're going to be making up by using all the knowledge that we have gained, and after that we'll be looking at the problem solving for this, right? So we will be covering some questions, some topics from the DSA, which will be in which we'll be sharing some videos with you guys that how you can actually start up how to build up your logic, how to solve problems, the DSA part, right, using CPP only. Even if you are comfortable with any other language, you can take up that language as your like problem solving language, right? But specific to this course that we are having over here, we'll be concentrating over C++ first, and then we'll move to the DSA, right? So I am also looking at the chat side by side. So if you guys have any doubt, anything that you want to like anything that you have to ask or anything, just put it in the chat and I'll check out the chat over here. Uh, and before starting, obviously, we would be needing our machines to be prepared for the things that we're gonna do, right? So I hope everyone over here, uh, even if you don't have it, I'll tell you quickly that you should have one IDE installed in your systems, right? Like for example, that you can see on my screen. Uh, I hope my screen is also visible to everyone. If it is not, please let me know in the chat. Okay. So we have one ID in which we will be writing our code, and I will be using VS Code in the class. If you have any other ID, if you have any other, you have some online compilers, feel free to use that. It's okay. Uh, but those who are like interested in using this VS Code, I'll also quickly tell you. So it's very like I'm just gonna open my Chrome over here. Yeah. So just go and write in the Google download VS Code. And simply from the first link, you can just download this VS Code for your machine. Like if you have Windows, if you have Mac, uh, just click on that and it will be downloaded and installed as simple as any software that you install, right? So once it is installed, what you have to do is you have to open the VS Code and go to this extensions option over here and just write C C++. So you need to also add this extension C C++ in order to execute your files in VS Code. So make sure that you install this extension over here, C C++. You will see your install button over here. And apart from that, one more extension I would recommend that would be Code Runner. Okay. So just install this code runner also. This code runner will help you to give this play icon over here, right? That I hope you can see over here, this play icon. So you can just directly click on the button and you can just run your code. It's very simple. So these are the two things that I would be requiring you guys. Apart from that, those who are on Windows, you also need to install MinGW. Uh, so again.
If you just go over here, you just simply need to write download mingw, and you will mingw, and you will get this first link over here, and just simply go and download. That's it. So this is for people who are on the Windows. You need to install mingw also. Once it is downloaded, just click on next, 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 and just install it. Make sure that your path is included. You When you are installing mingw, you will get this icon which will ask you include path. Make sure it is checked. If it is not checked, then you have to manually go to the settings, environment variables, and you have to set the path for that from there, right? So make sure when you are downloading and installing mingw, you are including path. Okay. So once this is done, I'm just going to close it. Yeah. So once it is done, we are now ready to write our code, and we are ready to start with the this bootcamp, right? So let's create a folder over here, and I'm just gonna give it a name, fundamentals. And inside this, I'm just gonna create a new file, 01. Okay. So simply, I have just created a new folder. So I'm just maintaining my hierarchy, and you guys are feel free to choose. Like if you are not aware about how to create it, so just go over here. You just need to create a folder where you want to create your project. So just go over here, open that folder in VS Code, and then inside that folder, you can start creating other folders and files, right? So I already have created this live folder on my desktop or somewhere, right? And I have opened that live folder over here. And inside that, I have created this fundamentals folder. And inside the fundamentals folder, I have created a CP 01.cpp. So .cpp is the extension, right, for the C++ files. So now let's start. Okay. Basically, uh, whenever we are writing our C++ code, the code execution starts from the main method, right? Now, what are main methods? What is a method? Basically, what are functions? What are methods? We're gonna be discussing it later on. But just for the starting, I'm just gonna tell you there is a method that we have in C++. The compiler will come to main first, and it will ask what do I need to do. Okay. So over here, I'll just create a method. The name of the method will be main. That's it. Now you don't have to, if you don't understand this, it's okay. We will be understanding in detail about what are methods, what are, you can call it function, method, whatever, right? What is this int? What are these brackets? What are these curly brackets? Everything we're going to be discussing in detail later on. You don't have to worry about it right now. But what I'm trying to say over here is the execution of my C++ basically starts from this main method. If even if this is spelled as capital M main, then it will not execute. This is not correct, right? It will only find this main method with small m. And this is my execution. This is my starting point of my C++. Okay. Even if I like save it and if I try to, so this is what you will get when you install the code runner. Okay. Uh, don't click on this. Just click on this arrow over here and you just click on this run code. If you see this debug, this bug option, don't click on this. Click on run code like this. And you will see that something happened. I don't know what happened. Nothing has been printed. Obviously, nothing will print over here. We have not done anything, but something happened over here. But I have not got any warnings. I have not got any errors. So that means my code is executing fine. My main is executing fine. There is nothing written over here. So yes, obviously nothing will happen, right? So let's say, let's try to do something. Let's try to see if things are working fine or not. So let's go with the very first step, that whenever you are learning any programming language, what you do, you first of all write hello world. So I need to print hello world on my console. How do we do it in C++? We will do it with the help of cout, right? So whenever I want to print something on the console, I will use this keyword called cout, right? So what do I want to see out? I will
This is like the way of writing C out. We'll write these angle brackets. And then I want to see out hello world. Hello world is basically a sentence for now. You can understand it as a sentence. So whenever we are writing a sentence, we will use double quotes. So I will be writing the sentence inside the double quotes. So hello world. So that is the first line of code which I have written, but obviously it is throwing some errors over here. It is saying C out is undefined. Okay. What does this means basically? Uh, So now comes the concept of the header files and libraries, right? So when we are executing the program of us, this C++, we have this C out I have written over here, but my compiler doesn't know that what does C out means, right? Because I have just called, like I have just written C out, but it is not defined anywhere, right? So what I need to do is I need to basically include a header file over here that will have the definition of cout. Like compiler should know na, that what is this cout doing. So in order to include all the input and output things, like if I want to do some inputs and if you want to get some outputs, so for that I would be including. And how would I include? I would do hash include iOS stream. Okay. So this is the header file that I would need to include in order to include now cout have the definition inside this IO stream. Okay. If I just try to not this, if I just try to click over here, so you will see that control click. So this is the file that I have included over here. And maybe somewhere I can, so this is no. So basically inside this file, I have somewhere definition of cout, but cout is still not being identified, right? So that means because this cout is further contained inside some namespace, right? So in order to use that, I have to actually derive it from std namespace. Okay. So now this is being identified by the compiler. It is saying, okay, cout is something which is defined inside the std namespace. That std namespace have the definition in the this iostream header file. Okay. So basically, this is how I have added hello world. If I click on the run, it will just execute my hello world over here. So this is running fine. Okay. Yeah, exactly. Yeah, we'll come to the using part, Tushar, right now. So let's say if I want to add some other statement over here, what I'll do, I'll say std out. If I just say like something like k, right? And if I just try to run it again, let's see what happens. So it is basically just printing everything in one line. So if I want to give a break in the line, I will use handle. Okay. Again, this handle is not being identified because this is again a part of std namespace. So now it is working fine. So I do not need to want to add this std again and again and again, right? So what I'll do is I'll do a global declaration of this std. What I mean by that is instead of writing this std again and again, I can just simply write on the top using namespace std. That's it. So now I do not have to write it again and again. So I can remove this also. I can remove this also. And I can remove this also. Okay, so this is basically how we have created a, I'll just add handle here also, handle. If I run it again, so now it is working fine. I'm getting hello world and hey in two different separate lines, and it is working fine. So this is a very basic, like a program or like a very basic. We have like created a hello world program. We have understood how the hello world program is working. What is the cout doing? What are the header files? What are the namespaces over here? And what is this main method over here, right? Uh, if I try to change the name of this main, and if I try to run my file, let's see what happens. It is not working. Why? Because the compiler is actually looking for a method
whose name is MAIN, all small. So it is just looking for that method, and whatever is written inside that method, the compiler is going to execute that only. So that is how you will be writing your code over here. Okay, cool. So I hope I hope you guys are all set up with everything. If you guys are all like everything is fine with your system, nothing is you don't want to repeat anything, you don't want to get to like there is problem in installations, there is some problem in MinGW or anything. If everything is fine, please uh, drop in the chat all set. Everybody is all set to start the boot camp. So please drop it in the chat. Yeah, basically we will be solving some problems which would be you know some common problems we will be solving, and mostly I prefer, like, I took references from lead code. Like, I prefer the questions from the lead code, but I guess the logic would be same. Even if you use code forces, even if you use any other platform, almost they will be same, right? So you don't have to worry about the type of problem. You have to worry about the logic, the understanding the logical part of the problem, right? So that is what you need to worry about. Don't worry about the platform. Okay. Asking for the packages, yes. So Ishita, MinGW would be requiring to there would be some checkboxes, right, that you need to check out. If you are confused in that, maybe you can check out some YouTube video for that and just tell how to install MinGW. You just need to include, I guess, one, two, or three packages from the top. You just need to install them, right? You just need to check them and you need to install them. But if you are still confused, uh, just quickly give a Google search or a YouTube search. Okay, great. Okay. बूट कैंप कब तक चलेगा? बूट कैंप चलेगा आपका 10 days. Okay, so I guess I am getting all set messages. So I am guessing you guys are all set. You guys are ready. Even if like you have any problem, we will be there to help you out. Don't worry about that. हाँ जी, continuous 10 days. 10 दिन लगातार चलेगा, ठीक है? So let's now begin with the very basic understanding of what is the first topic that we pick up at any language, variables and data types, right? So let's start with that and quickly understand. Like, we're gonna keep it a bit fast, right? Obviously, I'll not be skipping anything. I will be making you understand everything. But yes, the pace would be, if you feel like pace is very fast, do let me know. Okay. But yes, because this is a boot camp and not a batch, so we will be maintaining the pace and we need to cover all the things, right? Attendance criteria, I'm not sure. Shubham, I will confirm एक बार बता देंगे आपको भी. और ड्यूरेशन वही अराउंड 1 hour, 1 घंटा ऑलमोस्ट. ठीक है. ठीक है. So let's start, and let me just quickly start with the very basic variables and data types, which are very common in any language that you will be, like, whatever the language you're gonna be taking up, you will get the data types and variables in that. So let's understand the concept of variables first, right? Just a second, let me just share my other screen. Okay. ओके, हिंदी में मैं कर सकता हूँ बात, बट आई एम नॉट श्योर बाकी लोगों को हिंदी समझ आती है कि नहीं है. मतलब देर आर कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा से हिंदी में प्रॉब्लम होती है. मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई कैन हैव द सेशन मिक्स लैंग्वेज में भी. आप मुझे प्रेफरेंस बता दो कि हिंदी में पढ़ना है कि इंग्लिश में पढ़ना है.
जैसा अगर कोई ऐसा है जिसको हिंदी समझ नहीं आती तो फिर आई हैव टू बी लाइक थोड़ा सा दोनों भाषा बात करनी पड़ेगी, ठीक है। बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वट एवर यू से मैं उस लैंग्वेज में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक है, सो ठीक है, मैं मिक्स रखता हूँ। कुछ लोगों को इंग्लिश में है, कुछ लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम है, तो आई कीप इट मिक्स बिकॉज सम पीपल आर फ्रॉम आई गेस फ्रॉम द रीजन्स जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, ठीक है, आई कीप इट मिक्स, डोंट वरी, आई कीप इट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल सी चीज है। हमारे पास वी हैव वी हैव डेटा, राइट। हमारे पास डेटा होगा, कुछ क्या डेटा होगा? डेटा कैन बी numbers, डेटा कैन बी characters, डेटा कैन बी sentences, anything that we have. So we are having the data. Now we have to basically store that data in some container. Now when we are storing the data in the container, that container is known as a variable. As simple as that, ठीक है। उस कंटेनर को हम बोलते हैं, वो एक वेरिएबल है जो कि एक डेटा की वैल्यू को होल्ड कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट मेरे पास एक नंबर है, मान लो 5। इस 5 को मैंने एक कंटेनर में रख दिया। अब जो ये कंटेनर है मेरे पास, ये मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है। ये जो 5 है, ये क्या है? ये वैल्यू है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अब सी प्लस प्लस में कैसे बनता है? देखो, बहुत सिंपल है। C++ में, अब C++ is a strictly like we have to define everything in C++. Like if we are creating a variable, we have to define the type of the variable also, right? So if I say that मुझे एक नंबर बनाना है, right? So नंबर मुझे कहीं पे स्टोर करवाना है। So what I can do is I can basically create a data type, और जो मेरे पास वेरिएबल होगा उसका टाइप क्या होगा? उसी टाइप का होगा जिस टाइप का मेरे पास वैल्यू होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू स्टोर 5। व्हाट इज 5? 5 इज अ नंबर। सो वेरिएबल मेरे पास किस टाइप का बनेगा? नंबर टाइप का। अब नंबर हमारे पास सी प्लस में कौन कौन से होते हैं? एक बड़ा बेसिक से हमारे पास एक होता है इंट। इंट मतलब इंटीजर, ठीक है। सो मुझे एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल का नाम है मान लो एक्स, ठीक है। सो एक्स मैंने वेरिएबल बनाया, उसका टाइप क्या है? इंटीजर। और उसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू है 5। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली क्रिएट अ वेरिएबल इन अ सी प्लस प्लस। हमें पहले उसका टाइप देना है, हमें उसका नाम बताना है, और उसकी वैल्यू बता सकते हैं। नहीं बताते तो भी क्या होता है वो भी देखते हैं। चलो, अगर मैं वैल्यू ना बताऊं तो क्या होगा? लेट्स सी दैट आल्सो, राइट। सो लेट्स ट्राई टू see say over here, let me just create a new file. So first I will include hash include iostream using namespace standard or std int main, ठीक है। So basically, मुझे सबसे पहले क्या करना है? आई नीड टू क्रिएट अ वेरिएबल। सो हाउ विल आई क्रिएट अ वेरिएबल? आई नीड टू डिफाइन द टाइप। सो मैं, मुझे इंटीजर बना तो मैं इंट बनाऊंगा। उसका नाम क्या रखना है? मुझे एक्स रखना है, ठीक है। उसमें वैल्यू क्या रखनी है? मुझे 5 रखनी है, ठीक है। अगर मैं इसको सी आउट करवाता हूँ एक्स को, तो आउटपुट में क्या आ जाना चाहिए? यहाँ पे लेट्स सी, आउटपुट वुड बी 5, ठीक है। अगर मैं कुछ ना रखूं, इसको मैंने सिर्फ एक्स बना दिया, एंड इफ आई ट्राई टू आउटपुट इट नाउ, सो यहाँ पर क्या आ रहा है? मेरे पास 1 आ रहा है, ठीक है। 1 क्या है? ये दोबारा 1 आ रहा है। बेसिकली दिस इज नॉट अ 1, लाइक नॉट एग्जैक्टली 1, दिस इज अ गार्बेज वैल्यू। तो बेसिकली इसमें एक गार्बेज वैल्यू जा रही है जो मुझे नहीं पता कि क्या है, बट एक एक ऐसी रैंडम वैल्यू चलेगी इसके अंदर विच इज बीइंग असाइन्ड इन एक्स। एंड if you want to populate it, so you will have to assign some value, and that variable will hold that value over there, ठीक है। So this is the basic concept of how you're gonna create an integer or just a simple uh, variable in C++, ठीक है। लूप्स पर आएंगे अभी शिखा, अभी इसके बाद लूप्स डिस्कस करेंगे। अभी डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स करते हैं पहले, उसके बाद आएंगे लूप्स पर। Okay, so basically this is a variable. If I want to, if I say that again, zoom the code editor. Okay, let me just, is it fine now, Sanskar?
Okay, cool. So basically, if I say over here that the value of x is 5, if I try to override the value, so how do I override the value? I say that already I have this x whose value is 5. So what I have done over here is in the memory. So memory में क्या हुआ होगा? यहाँ पर एक मेमोरी मेरे पास है कंप्यूटर की, ठीक है? इसके अंदर मेरे पास क्या हुआ होगा? एक x जो है वो बन गया होगा, उसने कुछ साइज लिया होगा, मुझे साइज नहीं पता क्या होता है, मैं भी बताऊंगा कि इंटीजर का साइज वगैरह क्या होगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट एक मेमोरी के अंदर मेरे पास एक बॉक्स बन गया, ठीक है, थोड़ा साफ बॉक्स बना लेते हैं। मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बनेगा कुछ साइज का, ठीक है। अब साइज क्या है मुझे नहीं पता, बट दिस बॉक्स हैज बीन क्रिएटेड इन द मेमोरी एट सम लोकेशन। अब मुझे नहीं पता मेमोरी लोकेशन क्या है, वो कंपाइलर अपने आप असाइन करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से दिस हैज बीन फॉर्म्ड एट 100 मेमोरी, मतलब एक 100 लोकेशन है कहीं पर कोई पड़ी हुई है, वहां पर ये असाइन हो गया, बॉक्स बन गया। इसका नाम क्या है बॉक्स का? एक्स। और इसके अंदर वैल्यू क्या गई? 5। तो मेमोरी में कुछ ऐसी चीज मेरे पास हुई है जो लाइक एक्स, एक बॉक्स बना, उसका नाम एक्स है, उसकी वैल्यू 5 है, उसका एड्रेस 100 है। और इस लाइन ने बेसिकली ये काम किया मेमोरी में, ठीक है। इस लाइन ने ये वाला काम किया मेमोरी में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैव हैपेंड इन द मेमोरी एंड देन इफ आई ट्राई टू से दैट कि मुझे ये जो वैल्यू है ना, जो ये वाली वैल्यू है, ये- जो ये वाली वैल्यू, मुझे इसको 5 नहीं रखना, मुझे इसको 10 करना है। तो मैं कैसे करूंगा? बहुत सिंपल है यार, मुझे इस x की मदद से आई कैन एक्सेस दिस 5 ओवर हियर। सो मैं इस x की वैल्यू को कुछ भी 10 कर दूंगा, हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि x जो है अगर उसको मैं 10 बोल दूं तो ऑब्वियसली इट विल गेट ओवर रिडन, राइट। आई विल से x इक्वल्स टू 5, आई विल नॉट से int x इक्वल्स टू 5, नो आई एम नॉट क्रिएटिंग x अगेन ओवर हियर। वो तो दोबारा से डिफाइन करना होगा ना x को, सो आई एम नॉट डिफाइनिंग x अगेन, आई एम जस्ट ओवरराइटिंग द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग? बहुत सिंपल है यार, x को मैंने बोल दिया कि 10 कर दो, ठीक है। अब दोबारा से रन करके देखो तो आउटपुट में क्या आएगा? एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। सो बेसिकली उसी ही मेमोरी लोकेशन पर जहां पर पहला एक्स क्रिएट हुआ वहीं पर ही एक्स की वैल्यू अपडेट हो गई, एंड नाउ एक्स इज 10। ओके, सो this is a very simple example of how you can override the variables also. But yes, if you do not want your variable to get overwritten, मतलब there can be some like ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको ओवरराइड करना ही करना है। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट भी होगी कि आपको उसको कांस्टेंट बनाना है, राइट। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड अ कॉन्स्ट कीवर्ड बिफोर दिस। इससे क्या हो जाएगा? अब वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो फिक्स हो गई, अब आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। सो नाउ दिस इज थ्रोइंग एन एरर सेइंग दैट एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल वैल्यू। एक्सप्रेशन अब एक मॉडिफाइबल वैल्यू नहीं रही। तो ये मेरे पास कंसेप्ट हो गया कॉन्स्ट, ठीक है। इसको आई जस्ट कमेंट आउट एंड so this is a very simple way of understanding what is a variable, how to populate the values of variable, how to like modify or override the value of variable. Now let's discuss what are the types of variables that we have in C++. ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बेसिस पे यू विल बी डिसाइडिंग कि आप अपनी एप्लीकेशंस में किस तरह की चीजें बना रहे हो, एंड यू शुड बी फेमिलियर विद द कि अगर मैं इंट बना रहा हूँ या इफ आई एम क्रिएटिंग अनदर टाइप ऑफ डेटा, तो वो कितना स्पेस लेगा मेमोरी में, वो मुझे पता होना चाहिए। बिकॉज उसके बेसिस पे आई विल डिसाइड, डू आई नीड टू क्रिएट अ इंट, डू आई नीड टू क्रिएट अ डबल, डू आई नीड टू क्रिएट अ फ्लोट, व्हाट। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो हमारे पास टाइप ऑफ डेटा क्या क्या होते हैं इसमें? लेट्स गो अगेन ओवर हियर। सो इफ आई जस्ट राइट ओवर हियर डेटा टाइप्स, तो पहला तो हमने डिस्कस कर लिया क्या? इंटीजर। मेरे पास इंटीजर होता है, ठीक है। इंटीजर का जो साइज मेरे पास होता है दैट इज आई गेस 4 बाइट्स इन मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स, बट कई बार 2 बाइट भी कोई दिखा देता है, कोई आपका सिस्टम पे डिपेंड करता है। कई बार चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारे में कितना है। सो अगर मैंने यहाँ पर ये एक मेथड होता है मेरे पास साइज चेक करने के लिए, साइज ऑफ, ठीक है। इसकी मदद से आई कैन चेक द साइज ऑफ एक्स। इफ आई जस्ट रन इट, इट विल गिव मी 4।
सो फोर, व्हाट इज फोर? फोर इज 4 बाइट्स। इट इज बेसिकली ऑफ 4 बाइट। तो जो ये एक्स बना है ना मेरे पास, ये 4 बाइट का है। ठीक है। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये बॉक्स मेरे पास बना है, दिस बॉक्स विच हैज बीन क्रिएटेड, दिस वन, ये वाला जो बॉक्स है, ये मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है? 4 बाइट ले रहा है। ठीक है। सो दिस इज टेकिंग 4 बाइट्स इन द मेमोरी, चार। ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से आई टेक एग्जांपल ऑफ फ्लोट। एक मेरे पास फ्लोट होता है। फ्लोट क्या होता है मेरे पास? दैट कैन कंटेन न्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है। सो न्यूमेरिक वैल्यूज में फ्लोट का जो साइज होता है मेरे पास, वो भी आई गेस 4 बाइट ही होगा मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स में। ठीक है। एक होता है डबल। डबल भी हमारे पास पॉइंटर्स, लाइक पॉइंट वैल्यूज को कंसिडर करता है, बट इसका साइज थोड़ा ज्यादा होता है, 8 बाइट्स। इसका मतलब क्या हुआ? ये बाइट्स हैं सारे। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर टू क्रिएट अ डेटा विच शुड होल्ड द वैल्यूज विच आर लार्ज इन साइज, मतलब बहुत ज्यादा डेसिमल प्रिसीजन आपको चाहिए, तो आप फ्लोट ना बना के आप एक डबल बना लोगे। बट ऑब्वियसली जहां पर आपको चाहिए कि मुझे तो बस ये 22.7 स्टोर कराना है, अब इसके लिए मुझे डबल बनाने की क्या जरूरत है? मुझे तो बस एक इतना ही चाहिए, मैं इसके लिए कोई छोटा चीज बना लूंगा, फ्लोट बना लूंगा, बेटर होगा। ये मेरे पास मेमोरी में 8 बाइट ले रहा है। अगर मैंने डबल बनाया मेमोरी में, तो डबल मेरे पास इतना साइज लेगा। लेकिन अगर मैंने एक फ्लोट बनाया, फ्लोट मेरा इतना साइज लेगा। तो मेमोरी तो बच रही है ना मेरी, जो कितनी सारी है। सो आई नीड टू डिसाइड विच टाइप ऑफ डेटा आई वांट टू यूज इन द when we are creating and we are storing some members in that। ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखना। इसके अलावा uh, आप एक चीज और देख लेना, मतलब दिस वुड बी योर होमवर्क। अब दिस इज समथिंग दैट यू डू नॉट नीड टू रिमेम्बर, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार पढ़ लेना, कभी काम आ जाता है आपके जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह करते हो, कि इसका जो रेंज है वो क्या होता है। रेंज पढ़ लेना एक बार इनके। ठीक है। जस्ट गूगल पर जाना एक बार और रेंज देख लेना। इंट का रेंज, रेंज मतलब कि एक इंटीजर का जो ये बॉक्स है, ये जो इंटीजर का बॉक्स है, इसमें मैंने 5 तो स्टोर कर दिया, पर क्या इसमें 500 स्टोर कर सकता हूँ? क्या मैं इसमें 5000 स्टोर कर सकता हूँ? क्या इसमें मैं 50,000 स्टोर कर सकता हूँ? क्या इसमें मैं 50 लाख, 5 लाख स्टोर कर सकता हूँ? मैं कहाँ तक स्टोर कर सकता हूँ? कितने वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ? उसमें एक रेंज होगी ना इंटीजर को स्टोर करवाने की भी। सो वो चीज आप एक बार जरूर देख लेना, कि जो मेरे पास रेंजेस होती हैं वो, जैसे इंटीजर की तो मुझे याद ही है, इट्स आई गेस 2 raised to the power -31 -1 से लेकर 2 raised to the power 31। आई गेस दिस इज द रेंज। शायद मैं गलत हूँ, बट कुछ कुछ यही होती है। ठीक है। देख लेना एक बार, आप वेरीफाई कर लेना। तो इससे ज्यादा या इससे कम हम लोग इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। सिमिलरली फ्लोट की देख लेना, सिमिलरली डबल की देख लेना। ठीक है। तो एक बार रेंजेस पे नजर मार लेना। याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, वो हो सकता है विद टाइम याद हो जाए। ठीक है। सो अगेन, इफ आई वांट टू से, मुझे क्या बनाना है भाई? आई वांट टू क्रिएट डबल या आई वांट टू क्रिएट फ्लोट, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। मुझे टाइप बताना है, क्या बनाना है मुझे? फ्लोट बनाना है। फ्लोट क्या बनाना है? वेरिएबल बनाना है। नाम उसका लेट्स से ए है। वैल्यू उसकी क्या है? वैल्यू उसकी है 33.8 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सी आउट कर दूं ए को, तो आउटपुट में क्या आ जाना चाहिए? मेरे पास आउटपुट में आ जाना चाहिए 33.8 आ जाना चाहिए। ठीक है, आ गया। अगर मैंने इसका साइज चेक किया, तो साइज कितना आ जाएगा इसका? ए का साइज देख लेते हैं एक बार, कितना साइज ऑफ, इसको प्ले किया, 4 बाइट्स। ठीक है। तो फ्लोट इज बेसिकली टेकिंग 4 बाइट्स। सिमिलरली आप डबल बना लो, वो चेक कर लो। और हमारे पास थोड़े पॉपुलर बता देता हूँ मैं। कैर is a popular one, right? It is basically taking 1 byte. Char is for storing characters, single character, right? We have bool। bool हमारे पास 1 बाइट लेगा। bool क्या हमारे पास होता है? 0 1, ट्रू फॉल्स, राइट? सो ये सारे हमारे पास हो गए। सो ये सारी चीजें आप थोड़ा थोड़ा इसको दिमाग में रखना, बिकॉज वेन एवर वी आर डूइंग द क्वेश्चन ओवर दिस, सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट what टाइप ऑफ डेटा वी आर क्रिएटिंग। ठीक है। सो यहाँ पर जैसे मान लो डबल बनाया आपने, बी उसमें कुछ वैल्यू दे दी, 44 पॉइंट लेट्स से
एक दो तीन चार, 4 प्रिसीजन पॉइंट दे दिए इसमें, ठीक है। एंड इफ यू ट्राई टू प्रिंट आउट बी, तो इज बी प्रिंटिंग आउट, सॉरी साइज ऑफ नहीं, इफ आई सी आउट बी ओवर हियर, सो मेरे पास आउटपुट में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ए को सी आउट करूं और मैंने बहुत ज्यादा प्रिसीजन दे दिया, मतलब मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा, देखते हैं। रन किया तो मेरे पास ये कुछ राउंड ऑफ होके आ गया वैल्यूज, राइट। सो इट इज बेसिकली नॉट टेकिंग इतना सब डेटा, इतना सब प्रिसीजन पॉइंट नहीं ले रहा फ्लोट मेरा, बट हो सकता है कि इतने प्रिसीजन पॉइंट मेरे पास डबल जो है वो ले ले। सो बेसिक वाई, बिकॉज द साइज ऑफ द डबल जितना स्टोर करा है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर इट्स एक्चुअली डबल। तो आप इसके रेंजेस वगैरह पढ़ लेना, वो आपको काम आएंगी। उसके बाद ठीक है, इतना एक बार मुझे आप लोग प्लीज चैट में बताते रहना कि सब क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो प्लीज गिव इट, राइट इट इन द चैट बॉक्स। कहीं पर भी दिक्कत आए, अगर सब कुछ सही है तो भी बता देना चैट में, ठीक है। कूल। सो नेक्स्ट इज, लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है। हमें क्या इंक्लूड करना है अपना, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main, ठीक है। ठीक है जी, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, नेम स्पेस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड कि इनपुट आउटपुट बहुत सिंपल है, ठीक है। अब अभी तक तो हम सिर्फ इनपुट अपनी तरफ से दे ही जा रहे हैं। अगर मुझे यूजर इनपुट लेना है तो क्या करना पड़ेगा। अब मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, ये जो हेडर फाइल है मेरे पास आईओ स्ट्रीम, इस हेडर फाइल में ही हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच आर हेल्पफुल फॉर मी टू क्रिएट, टू बेसिकली लाइक यूज द स्टैंडर्ड ऑपरेशंस, राइट। द सी आउट, द सी इन होता है टू टेक इनपुट्स फ्रॉम द यूजर, राइट। सो वो सारे इसमें हमारे पास अवेलेबल है। And further C out, specifically C out, C in are basically stored in this std namespace, ठीक है। So what are we going to do is let's try to very simple, एक बहुत सिंपल सा हम चीज करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। If you are not familiar, if you want a revision, quick revision, तो एक छोटा सीख करके देख लेते हैं कि मुझे यूजर्स इनपुट चाहिए, ठीक है। तो यूजर्स इनपुट के लिए हम सी इन यूज करेंगे। जैसे मान लो मैंने, मुझे चाहिए कि एक, आई वांट टू जस्ट हैव सम इनपुट फ्रॉम द यूजर, सो आई जस्ट से कि एक इंटीजर मैंने बनाया, उसके अंदर आई विल बेसिकली टेक द यूजर इनपुट, सो लेट्स से नम, ठीक है। अभी दिस नम इज बिन हैज क्रिएटेड इन द मेमोरी, कहाँ पर गया ये रहा। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, अभी मेरे पास मेमोरी में क्या हुआ है, सिर्फ ऐसे एक बॉक्स बना है जिसका नाम है नम, बस ये हुआ है। कुछ लोकेशन होगी इसकी, लेट्स से 507, कोई ऐसे एक मेमोरी एड्रेस पे बन गया जिसके अंदर कुछ नहीं है, बस एक नम हमने एक बना दिया, ठीक है। मुझे क्या करना है, बेसिकली आई वांट टू टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर दैट वैल्यू इन द नम, एज सिंपल एज दैट। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले एक बार यूजर से पूछ लेता हूँ, या यूजर को बता देता हूँ कि एंटर अ नंबर, ठीक है। ऐसा मैंने पूछ लिया उससे कि एक नंबर एंटर कर दो। अब जो भी वो नंबर एंटर करेगा, मुझे उस वैल्यू को इस बॉक्स के अंदर लाना है, मतलब इस नम के बॉक्स के अंदर उस वैल्यू को लगाना है। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। मैं कह रहा हूँ कि जो भी यूजर से इनपुट आएगा वो मुझे सीन कहाँ पर कर देना है, नम में, हो गया। सो दिस इज हाउ यू विल टेक यूजर इनपुट, ठीक है। सी आउट कर देते हैं, सी आउट नम इज, जो भी नम होगा, कैंडल लगा दो, रन करते हैं इसको एक बार। सो इट इज आस्किंग फॉर टू एंटर अ नंबर, सो आई विल से दैट 10, सो द नंबर इज, उसको मैंने आउटपुट नहीं किया, नम इज num, so 10 and the num is 10. So this is how basically we are creating a variable, we are taking the user input and then we are just printing it out, as simple as that, ठीक है।
If you want to take multiple user input, you can use cin again on some other variable. It will again ask for that prompt, enter that number, and you will be able to input that in that another variable, right? सो बहुत बहुत ज्यादा बेसिक था। अभी तक हमारे पास कुछ नहीं, हमने बस सिर्फ ये पढ़ा है कि हाउ विल बी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा वी हैव, वेरी बेसिक टाइप ऑफ डेटा। ऑब्वियसली कुछ और भी होंगे हमारे पास जो आप, अगर आपको चाहिए तो आप पढ़ लेना, मतलब मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि अकॉर्डिंग टू योर लाइक यूज केसेस, जब आप फर्दर बाद में यूज करोगे, तो अभी जैसे मान लो आपने एक इंट तो पढ़ लिया। अब इंट बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे पास एक एक नेगेटिव रेंज से लेकर एक पॉजिटिव रेंज तक के सारे नंबर स्टोर कर रहा है। बट हो सकता है आपके पास ऐसा कुछ एक एक प्रोग्राम आ जाए कि आपको सिर्फ उसमें पॉजिटिव ही लगाने हैं, मतलब यू आर नॉट कंसर्न विदाउट नेगेटिव, बिकॉज आपको कभी कोई नेगेटिव नहीं आने वाली चीज। ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, मान लो कोई भी ऐसा एग्जांपल, मान लो कि आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जिसमें आपके पास एज, आपके पास एक होगा। अब एज जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो व्हाई वुड आई लाइक टेक दिस इंटीजर, एंड इस इंटीजर का जितना स्पेस है उसका जो हाफ वाला है, मतलब जो नेगेटिव वाला रीजन और एक पॉजिटिव वाला रीजन है, ये वाला तो कभी यूज ही नहीं होने वाला उस केस में, राइट? आई थिंक आई हैव नॉट शेयर्ड माय स्क्रीन, या सॉरी। सो basically this integer is taking this negative and this positive, like negative side also and positive side also, right? बट हो सकता है कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है, जैसे मान लो एज के लिए करना है, तो एज के लिए तो कभी नेगेटिव वाला यूज ही नहीं होगा। मतलब अगर मैंने एक जो इंटीजर का जो स्पेस है ये वाला, इसमें एक नेगेटिव साइड है और एक पॉजिटिव साइड है, मतलब इतना नेगेटिव से होगा इतना पॉजिटिव। बट ये वाला चीज तो मुझे कभी काम ही नहीं आने वाला, राइट? मुझे सिर्फ पॉजिटिव से मतलब। तो इफ आई वांट टू क्रिएट अ डेटा टाइप फॉर दैट, व्हाई वुड आई बी यूजिंग दिस इंट फॉर दैट? उसके लिए हमारे पास एक आता है अनसाइंड इंट, अनसाइंड। ठीक है। उसमें आप ये वाला एक डेटा टाइप यूज कर लो, मॉडिफायर बोलते हैं वैसे इसको, आप ये मॉडिफायर यूज कर लो। इसको आप बना लो, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन इंट यू कैन क्रिएट अनसाइंड इंट, ताकि आपके पास सिर्फ सारे पॉजिटिव नंबर सी उसमें रेंज में आ सके, नेगेटिव ना आ पाए। सो इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस। सो ये मॉडिफायर्स आपको, अब ये ऐसी चीजें हैं जो माइट नॉट बी यूजफुल एवरी डे, वो कभी वंस इन अ ब्लू मून आप लोगों को यूज करने के लिए आ सकते हैं। तो जब आपको जरूरत पड़े तो गूगल की हेल्प लो, गूगल से समझो, गूगल से पढ़ो। ठीक है, वहां पे देखो कि मुझे सिर्फ इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नंबर स्टोर करना है, तो कैसे बनाऊं इंटीजर को मैं, तो गूगल आपको बता देगा कैसे बनाना है। ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेटर्स नाउ। वेरी सिंपल। सी प्लस प्लस में बात करते हैं अबाउट ऑपरेटर्स। हाउ इज डीएसए इंपॉर्टेंट फॉर फॉर प्लेसमेंट? वैसे तो शॉर्ट में अगर बताऊं मैं सैफ, तो डीएसए इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट डिपेंडिंग अपॉन द रोल। अगर आप रोल अप्लाई कर रहे हो, एक डी आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो उसमें डीएसए ही पूछी जाती है। बट डीएसए इज इम्पॉर्टेंट, डजेंट मैटर अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हो, अगर आप एसडी में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, डजेंट मैटर, आपको डीएसए तो आना ही चाहिए। बिकॉज डीएसए से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा होता है, और एंड गोल हमारा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना ही होता है। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे एक सेशन में, लास्ट में जो हमारा सेशन होगा हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट Q&A। हमने लास्ट में ये प्लान किया हुआ है, तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट अभी के लिए शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, डीएसए इंपॉर्टेंट तो है ही है, मतलब करना ही करना है। अगर आपको एक अच्छा आपको कुछ भी आपको काम करना है, डेवलपमेंट करना है, कुछ भी करना है, डीएसए तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपके अपने भलाई के लिए, आपका अपना दिमाग अच्छा होगा। So this boot camp will be 10 days long, and yeah, we are just starting with the CPP, C++ right now, and then we'll be proceeding to the DSA part. Okay. So talking about the operators now. Okay. So operators हमारे पास क्या होते हैं? बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें नोट कर लो। एंड बहुत टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं सी प्लस प्लस में। पहला हमारे पास टाइप होता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक कौन से होता है हमारे पास? सबसे सिंपल वाले, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है। सो ऑल दीज ऑपरेटर्स
मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसमें हमारे पास प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मॉडुलस निकालना है, दीज आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। अब इनके यूज केस ही बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, मैं आपको बस एक क्विक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, एंड यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस टू गेट बेटर एट इट, राइट। तो मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक नया फाइल है। तो मान लो मेरे पास एक इंटीजर है ए जिसके अंदर वैल्यू है 5, और एक मेरे पास एक इंटीजर है बी जिसके अंदर है वैल्यू 10। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना मुझे। आई जस्ट लेट्स से मुझे ए और बी को ऐड करना है, तो कुछ नहीं करना, ए प्लस बी कर दो। ठीक है। माइनस करना है तो ए माइनस बी कर दो। मल्टीप्लाई करना है तो ए एस्ट्रिक बी कर दो। डिवाइड करना है तो ए स्लैश बी कर दो। मॉडुलस निकालना है तो ए परसेंट बी कर दो। ठीक है। So these are the ways in which you can do a calculation between two variables. Whatever the value they are holding, you just need to just let's say if I hold the value in some other variable, let's say int answer would be a plus b. So whatever the value of a plus b would be, that would be stored in this answer. And if I just simply say C out answer, so it is going to give me 15 over here. So basically बहुत simple सी चीज है। जो ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्ट डूइंग दीज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर डूइंग द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, दीज आर द बेसिक रोल। और ठीक है। तो अब आप लोग को क्या करना है, एक मैं आपके लिए यहाँ पे एक असाइनमेंट लिख रहा हूँ जो आप लोग ट्राई कर लेना। ठीक है। और वो सबमिट कर देना। असाइनमेंट में करना है कि आपको एक फाइल बनानी है, उसमें यू हैव टू बेसिकली मेक अ बेसिक कैलकुलेटर। ठीक है। सो प्लीज नोट दिस डाउन। आप लोग एक ये असाइनमेंट सबमिट करनी है, आपको एक सिंपल सा असाइनमेंट बनाना है, आपको एक एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना है। अभी आज के लिए मैं बहुत सिंपल सा मैं असाइनमेंट रख रहा हूँ, बिकॉज यू जस्ट नीड टू गेट कंफर्टेबल विद द सिंटैक्सेस, राइट। सो कैलकुलेटर कैसे बनाना है, यूजिंग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर। अब you can be a bit creative in this. You can like what should I write? Like maybe this like optional. You can create a basic calculator according to you, but optional can be take user input of two numbers, then take input for operation to perform, and print the answer. ठीक है। print the answer. That's it. ठीक है। तो एक बहुत सिंपल चीज करके देखना है, ये वाली ट्राई। ऑप्शनल मतलब कि ये यूजर इनपुट आपका ऑप्शनल हो सकता है, बट ये ऑपरेशंस आप हार्ड कोड वैल्यू भी कर सकते हो या फिर यूजर्स इनपुट भी ले सकते हो। ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड ट्राई आउट। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग ऑपरेटर्स ओवर हियर जिनको हम बोलते हैं, एक हमारे पास इसमें होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड वी हैव डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। ये दो ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं। बेसिकली इंक्रीमेंट इज इंक्रीमेंटिंग बाय वन, एंड डिक्रीमेंट, इसका एक एग्जांपल है छोटा सा, मैं आपको वो दिखाता कि आप लोगों को थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है। सो इफ आई जस्ट गो बैक ओवर हियर, लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट। देखो, जैसे मान लो व्हाट आई हैव इज आई हैव दीस टू नंबर्स ओवर हियर। इफ आई जस्ट से ओवर हियर कि मुझे सी आउट करना है, what is increment? Basically plus 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 is just incrementing value of a variable by one, right? So if I say that I want to do a plus plus and then okay, so basically what I'm doing is I'm just incrementing the value of a, and we have to just print it out. Okay. So play this. So the output is still 5 over here. Okay. Although I have incremented the value of a, but this is not incrementing, it is just printing 5. If I, instead of doing this,
If I just say over here, see out value of A before, if I just write value A here and then, okay. So I'm just saying that value of A, and if I value of A after increment, if I do this, if I run this again, so you see value of A before was 5, then again I incremented, it was 5, and then it became 6. So actually the value was incremented over here, but it is basically this thing that we have done. This is known as post increment. We have first printed the value of A and then incremented it. That's why in the next line we are getting 6, because in the next line we are seeing it that A has been incremented, and when I'm trying to print over here, it is coming 6 over here. But in this line of code, it is incremented actually, but it is not printed because we printed it first and then we incremented it. This is known as post increment. But instead, if I do something like this, if I just do A plus plus, sorry, plus plus A, if I play it now, then you will see that the value of A was 5 before, then it became 6 at this line, and then it after it is 6 only. So basically what happened in this line was it incremented first and then it printed the value of A. So this concept is known as the post increment, pre-increment, sorry. So plus plus A is pre-increment and A plus plus is post increment. Okay. Nishant, I'll be telling you that how to like submit the assignments and all. For now, just do it on your end, and wherever it will be, we are asking you to submit. Just give the link uh, and just submit it there. Okay. So for now, you just do it for at your end, and then we'll be collecting the assignments from you. Okay. So this is how the pre-increment and post-increment actually looks like. So next up, we have other operators. So I'm just gonna give a quick brief about them also. So the second one would be assignment operators. So what are the assignment operators? We have equal to, we have plus equals to, we have minus equals to, we have multiply equals to, and so on. So basically, we are just assigning the values in this. Okay. Can you submit the assignment in online compiler? I'll let you know, Mike. Just wait for a bit. I'll tell you how to submit assignments. Okay, don't worry about that. So basically, assignment operator, we are just assigning, like we are just basically assigning one value to another, right? Like we have seen over here already. We are saying that A is basically 5. So basically, we are assigning A. We are assigning 5 in A. Okay, and similarly with the B also. So assignment operator. Yeah. So these are the operators. Plus equals to, we're gonna discuss it in array properly, like or in the loops properly. So basically, plus equals to would be we are assigning the value of we are assigning some value in the current value of that variable. So we're gonna understand this plus equals to minus equals to a bit in detail when we are doing the loops. Okay. Next up, we have relational. So what do we have in the relational is this comparison operator, okay, equals to, not equals to, greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, these things. So we are basically have like finding the relation between two things over here, right? So just to give an example over here, okay, let me just show the screen. So this is the relational operators that we have seen over here, and then just to give an example, let's. So I have A equals to 5 and B equals to 10. If I have to just maybe uh, let's check like if A is not equals to B, like I'm just checking the relation between A and B. So I'm saying that if A is not equals to B, I'll just store this value in some bool, let's say answer. Okay. So if I just see out over here answer,
Let's see what is the output. So the output is 1. 1 means true. So that means yes, A is not equal to B. So uh, yeah. सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो मेरे को क्या यहाँ पर क्या मिल गया, पता लग गया कि ए और बी की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो मुझे वो रिलेशन पता लग गया ए और बी के बीच में, ठीक है। तो दैट इज वाई, दैट इज हाउ वी आर बेसिकली रिलेटिंग टू वेरिएबल्स विद ईच अदर। तो ये हमारे पास ऑपरेटर हो गए नॉट इक्वल टू। अगर आपको चेक करना है कि क्या ए बी से ज्यादा है, तो ए ग्रेटर देन बी अगर है, ए लेस देन बी है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, ए लेस देन इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है। सो ये सब चीजें हमारे पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स है। बेसिकली हम लोग चेक कर सकते हैं कि दो चीजों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। सो another type of operators we have in C++ is लॉजिकल, ठीक है। सो लॉजिकल हमारे पास क्या होगा, सॉरी, या लॉजिकल, बोथ विल बी लॉजिकल। सो लॉजिकल में हमारे पास क्या होगा, एंड, और, एंड नॉट, ठीक है। सो ये वाले ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होंगे, लॉजिकल। लॉजिकल मतलब हम कंडीशन बेसिकली कर रहे हैं चेक कि अगर ये भी मतलब ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, वो सब चीज चेक करते हैं कि अगर दोनों चीजें ट्रू हैं, दोनों चीजें फॉल्स हैं, तब हम उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब ये वाली जो चीज है वो फिर से हम कहाँ पे समझेंगे ढंग से, जब हम अभी लूप्स पढ़ेंगे या जब हम कंडीशंस पढ़ेंगे, कंडीशन स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, इफ एल्स, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वहीं पर ही हमारा डिस्कशन हो जाएगा अबाउट दीज असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये लूप्स में हमारा कवर हो जाएगा, ये हमारा अभी इफ एल्स में कवर हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड देन वी हैव द एक ऑपरेटर हमारे पास होते हैं बिटवाइज, बिटवाइज, ठीक है। सो बस ये लास्ट है आज का, इसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, हमारा आज ऑपरेटर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक बार ऑपरेटर्स का लास्ट हमारे पास है बिटवाइज, ये थोड़ा समझ लो कि बिकॉज कुछ क्वेश्चन इसके बिटवाइज के आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको पता होना चाहिए बिटवाइज ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं, ठीक है। सो बिटवाइज ऑपरेटर होते कौन से हैं हमारे पास, बहुत सिंपल से डिस्कशन करें अभी। एक हमारे पास होता है बिटवाइज एंड, एक हमारे पास बिटवाइज एंड, अब ये डबल एंड है, सिंगल एंड, ठीक है। बिटवाइज और, सिंगल और, लाइक दिस। एंड देन वी हैव, सॉरी बिटवाइज बोल रहा हूँ मैं, बाइनरी, ओके। सो दिस इज बाइनरी एंड, दिस वन इज बाइनरी एंड, दिस इज बाइनरी और, देन वी हैव which would look something like this, ठीक है। और भी हमारे पास वन कॉम्प्लीमेंट होता है, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट, वो सब चीजें भी होती हैं, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया हाउ दिस बिटवाइज इज बेसिकली वर्किंग। सो बिटवाइज ऑपरेटर जो हमारे पास होते हैं, वो काम करते हैं हमारे पास उसके बिट पे, मतलब एज इन जैसे मान लो अगर मुझे किसी नंबर का जीरो वंस निकालना है, ठीक है। सो जीरो वंस निकालने के लिए मतलब उसका बाइनरी जो नंबर होगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, चलो ठीक है, मैं एक सेकेंड, आई जस्ट ओपन अप टेबल ओवर हियर। हाँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ बाइनरी ऑफ 12। अच्छा, पूरा चार्ट ही खोल लेते हैं एक बार। सो मेरे पास बाइनरी चार्ट, तो जैसे ये चार्ट है मेरे पास, ठीक है। सो इसमें मान लो मेरे पास ये है 12 है, ठीक है। सो 12 का बाइनरी क्या है मेरे पास, 1100, ठीक है। सो मेरे पास मान लो 12 है एक नंबर, इसका जो मेरे पास है 1100, ठीक है। और मैं एक और कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से दिस वन। सो दिस इज 25 11001, ठीक है। सो दिस वुड बी 25 का क्या है मेरे पास, 11001,
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर इन दोनों के ऊपर कोई बिटवाइज परफॉर्म करना है, ठीक है। सो मैं कैसे करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे परफॉर्म करना है बिटवाइज एंड क्या बोलता है कि अगर मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर बताऊं बिटवाइज एंड जो है, एक सेकेंड, बिटवाइज एंड जो है वो क्या बेसिकली बोलेगा कि मेरे पास अगर दोनों के दोनों जो है वो जीरोज हैं, तो मेरे पास उसका आउटपुट जीरो होगा। अगर मेरे पास ओनली इन द केस इफ आई हैव बोथ ऑफ देम एज वन, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, या लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट। सो बिटवाइज क्या बोलता है, एंड क्या बोलता है मेरे पास कि अगर मेरे पास एक नंबर है ए और मुझे उसको एंड करना है बी के साथ, ठीक है। अगर मेरे पास ये वाला केस है, इस केस में क्या होगा, अगर मेरे पास जो ए की वैल्यू जो है वो जीरो है और मैं उसको बी से एंड कर रहा हूँ और मान लो बी की वैल्यू भी जीरो है, तो उसका मेरे पास जो आउटपुट होगा दैट वुड बी जीरो, ठीक है। अगर मेरे पास ए की वैल्यू जीरो है और मेरे पास बी की वैल्यू वन है, तो इसका भी मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, दैट वुड बी zero only. ठीक है. If I have this as one and this as zero, then the output would be zero. Only in the case if I have both of them as one, then the output would be one. मेरे पास this is what a bitwise and stands for. ठीक है, bitwise and का मतलब ये होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास क्या क्या है, I have a 12 and I have a 25. So मेरे पास 12 and 25 का अगर मैं एंड निकालूंगा तो यू जस्ट ट्राई टू डू इट ऑन द कॉपी, ठीक है। जैसे मैंने बताया अभी कि दोनों अगर जीरो होंगे तो जीरो होगा, जीरो वन होगा तो जीरो होगा, वन जीरो होगा तो भी जीरो होगा, ओनली इन द केस ऑफ वन एंड वन। सो व्हाट यू ट्राई टू डू इज, जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये लिखा है ना, like I have written over here. So what you try to do is you try to write this and try to find this. So this zero and this one, right? You need to you so this would give me zero. Zero zero would be give me zero. One zero would give me zero. One one will give me one. So you try to do it on the copy to understand it better. Okay. And over here, let me just write A is 12 and this would be 25. So if I try to just let's say see out A and B. So let's see what is the output, A and B. So the output would be 8. Okay. Now, how does this 8 comes up? So if you do it on the notebook, like this is like a task for you, you need to like do it on the notebook. And if you try to figure out what is the binary that is coming out. So the binary that would be coming out would be this 1000. So that is the representation of 8. Okay. So this is something that I want you to try first because I can show you. Like I have already written it over here. I can show you to like how these are added. But just do it on the notebook and see what. So 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0. So it is just giving me 1000. So 1000 is the representation of 8 over here. Okay. So that is why the output is 8. Now similarly, we have done for the bitwise and similarly for OR, if I have at least one, like in the case of or, I'll just copy this. So in case of or, if I have at least one, then it will be one. So 0 0 would be zero, this would be one, this would be one, and this would be one. Okay. So this is how the or will work. So this happens on the bits. Okay. So just like write it on the notebook, try to solve these, just give it a try, right? Do the calculator and stuff. Okay. And I'll be telling you the details on how to submit the assignments and all. Don't worry about that. Just do it on your end, keep it ready on your end, and I'll be sharing the details with you. And yeah, I guess you guys have understood the session that we have like and like covered the topics today. If you feel कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद दोबारा रिपीट आपको दोबारा से समझ मतलब दोबारा समझ आए या कुछ भी
ऐसा कुछ होगी दोबारा रिपीट करवानी, एक बार इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी पूरे सेशन की, तो एक बार आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो उसके बाद में। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो मेरा कोड होगा जो मैं क्लास में कर रहा हूँ वो भी आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे रेफरेंस लेना है तो आप वो भी देख सकते हो। स्टिल आपको लगे तो हम दोबारा से डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे क्लास में कल बताना। हमारे कल सेम टाइम पे फिर से सेशन होगा, एट 7 PM विल बी स्टार्टिंग द सेशन। एंड आपके टॉपिक्स पता है आपको कल के क्या 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 कवर होगा। ठीक है, सो मेक श्योर करना कि आप लोग ज्वाइन करो क्लासेस को। ठीक है, चीजें समझने की कोशिश करो और अच्छे से, दोबारा से आपकी रिवीजन हो रही है तो आप इसका एडवांटेज लो, एंड धीरे धीरे वील बी गोइंग टू द लॉजिक बिल्डिंग पार्ट, एंड वहां पर आपको और हेल्प होगा। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो आपके लिए और ज्यादा हेल्प होगा इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए फिर आई गेस वी आर डन फॉर टुडे सेशन, वी विल कंटिन्यू टुमारो। संस्कार, आर यू देयर? Yes. Am I audible? Yeah, just a second. So basically for tomorrow's topic, you can check the tomorrow's video का thumbnail, which is available on the channel. वहाँ पर सारे topics mentioned है, कल क्या क्या cover होगा। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट आपके पास रेडी है, अगले 5 दिन जो लाइव हमारे पास चलने वाला है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड over the videos, so you can check out the videos, and all the topics are mentioned there. Okay, yeah, okay, yeah, Sanskar. Okay. So for anyone who doubt hai, if it's whether it's related to the assignment part or the curriculum which we are going to follow, so we have filled a Notion over there. So you guys can just hop onto the link and you can easily access the entire detail. And meanwhile, जो assignment form है is being open now. जो mentor अधिराज सर ने जो mention किया assignment, you can work on it and you can submit via Google Form, which is being mentioned in a Notion. Okay. So thank you, Adhiraj sir, for lovely session and the insightful session. And tomorrow we have the same session, with different topic at 7 p.m. Okay. So thank you everyone Yeah, for guys, so joining. make sure you join tomorrow also. Okay. So thank you everyone, and I will be sharing one link as well to join your WhatsApp group, and we will be dropping each and every announcement over there. Yeah, Dhirato, you want to add anything? Okay, yeah, I'll see you guys tomorrow then. Good night, everyone. Good night. Bye bye, everyone. Bye. Bye. Okay, Sanskar, bye. Bye, Dhirato. Bye. Okay, guys. So feel free to join session tomorrow, 7 p.m. page, and you guys have access to the Notion. You can check हमने pin करके रखा है pin format. You can check the pin format over there, and you can directly join the WhatsApp group from there, or you can access the submission form of the assignment. And we will be also updating today's resource. जो mentor ने समझाया था, the code file and everything, so you can access it on the Notion. Okay. So thank you everyone. Thank you for joining. You can leave the session.